A big hello to everyone and warm welcome to the channel. I hope you all are doing great. My name is Rahul Rawat and in today's video we have a very important update for all the students of Uttarakhand Open University. If you have been waiting for your exams result, so this video is for you. We will be talking about the latest result announcement and how you can check your score. So as you know, the examination for the summer session of July 2025 were held recently. The good news is that the university started to declaring the result gradually. Very soon you will see the result for the various courses including undergraduate, postgraduate, certification and diploma courses, even improvement courses on the university official website. Now for the big news, the result for the Master of Sanskrit Literature has been declared. That's right. On September 12, 2025, Uttarakhand Open University officially announced the result for the Master of Literature course. So if you are a student of this program, this update is for you. You haven't checked your result yet, so you can do it right now from the university official website. I have put the direct link in the video description below to make it easy for you. Simple click the link, follow the process and you can see your result. And here is a promise for me. As soon as any new result are declared by the university, we will share the update with you first on our official YouTube channel. This is the start of our new result series and we will keep you informed on a regular basis as much as I can. So if you want to stay up to date with all the latest announcement from Uttarakhand Open University result and you haven't subscribed yet, please do it first. Go ahead and hit that subscribe button right now. And meanwhile, you can also join our Telegram channel for the latest news and latest update and link in the description below. You can go through please. उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के करंट रिजल्ट स्टेटस चेकआउट करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एग्जामिनेशन यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, सेशन यहाँ से जनवरी 2025 सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम यहाँ से मास्टर ऑफ संस्कृत लिटरेचर 20 एंड 21 कोर्स का 3rd एंड 4th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ से आप अपना पर्टिकुलर सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को एंटर करना होगा करेक्टली। विद कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। गेट रिजल्ट एंड डाउनलोड रिजल्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका रिजल्ट डाउनलोड होकर आ जाएगा और आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट वन वे पोर्टल के माध्यम से भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बैक पेपर में भी मास्टर ऑफ संस्कृत लिटरेचर 21 कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से बैक में 3rd एंड 4th सेमेस्टर का रिजल्ट भी एक्सेस कर सकते हैं इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से। देन दैट इसमें इंप्रूवमेंट के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं अभी फिलहाल किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत। जैसे अपकमिंग रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, चाहे वो आपके मेन कोर्स के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स की या फिर आप लोगों के बैक या इंप्रूवमेंट के हों, वो भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सो स्टे ट्यून विद अस। एंड बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, आई डू हैव वन स्मॉल फेवर टू आस्क. If you found this video helpful or interesting, it would be incredible honor if you could take 30 seconds to leave a review or feedback about this video in comment section, and please do like, share and subscribe this channel because I would truly love to hear about your thought, insight, feedback and your personal journey and everything in between. A few words you share there will be help spreading this information. So many co-learners who are also looking for the same kind of questions, queries, doubt and you are, and it will change someone academic goal. So I hope that I'm expecting you are going to share a wonderful review feedback for me. For anyone that is interested in connecting with me even further, I would love to hear from you at Uttarakhand Open. It's my IG account. About anything and everything. It always brings me such a deep feeling of the joy to hear other people's story. So I do keep my inbox open for those who would like to share. And I look forward to hear from you soon. Bye bye. I got to go now.